हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACME कॉमर्स अकेडमी। OSD का लेसन नंबर 3 वर्क मेजरमेंट का टेक्निक ऑफ मेजरमेंट में नेक्स्ट आंसर आज कर रहे हैं टाइम स्टडी। राइट, मोशन स्टडी ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो आप देख लो। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेक्निक्स है वो टाइम स्टडी है। नाउ, जैसे मोशन स्टडी में हमने लिखा था वर्क मेजरमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, वैसे ही टाइम स्टडी में भी आप वही रिपीट कर लोगे। चाहिए तो आप वापस वो वीडियो देख लेना, वर्क मेजरमेंट के मीनिंग और डेफिनेशन, तो वो आप वापस देख लो। राइट, तो वो लिखने के बाद यू विल स्टार्ट विथ योर टाइम स्टडी। सो व्हाट इज द टाइम स्टडी? इज अनदर टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क. Time is very important, and even in production department, time plays a very important role to complete the production in particular time period. So what is the time study? It is an art of observing and recording the time required to do each detailed element of an industrial operation. मैंने मार्किंग भी किया है वहां पर, आप वही लिख सकते हो. So what is the definition? Art of observing and recording the time. How much time you are taking to complete the particular industrial operation or work is called your time study. Now, what is the main purpose of time study? To determine, to decide how much time is required to complete the one job. राइट, पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है. वाई? बिकॉज इट माइट हैपन कि वन वर्कर इज टेकिंग लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दैट वर्क एंड अनदर वर्कर इज टेकिंग लेस टाइम टू कंप्लीट द वर्क, जबकि काम दोनों का सेम ही है. इन दैट केस द कंपनी विल सफर in terms of cost, क्योंकि एक वर्कर, सपोज इफ वन वर्कर इज कंप्लीटिंग द टास्क, या एक वर्कर है जो काम कंप्लीट कर रहा है सिर्फ 50 यूनिट्स इन वन डे in a proper time limit, or second worker he might be doing say around 35 units in a one day. It means the company is paying for only 35 units to one worker, और दूसरे को 50 units के लिए it becomes a uneconomical. कंपनी का कॉस्ट ज्यादा जा रहा है to pay the another worker who is just completing the 35 units in a. उसके लिए क्या चाहिए? टाइम स्टडी. So it is a study done to find out how much time is required to complete the job. This is the procedure where a job is subjected to observation, right? The particular job is observed and accordingly the time is recorded, right? Okay, how much time that worker is taking to complete the task. Like you have a stopwatch, और अभी तो हमारे पास मोबाइल भी है, so through which you can easily find out the time taken. Now, the time study is a work measurement technique. See, recording the time and the rates of working for element of a specified job is carried out under time study. Okay? आपको time record करना है and how much time you will require to complete the specified job. That is all is done by using the time study. इसके लिए you have to analyze the data and you will find out okay, how much time is required to carry out the job by a normal speed. It means once your motion study completes, the next step comes for the management to know that how much time is required to complete that. तो पहले मोशन स्टडी होगा एंड मोशन स्टडी कंप्लीट करने के बाद, राइट, यू मस्ट राइट दिस इन योर आंसर प्रॉपर्ली कि वंस द टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज ओवर या कंप्लीटेड, the next step is what? For the management would be really interested in knowing that how much time is required to do the job. And information of time study is used to develop a particular time standard for a given job in all aspects, right? In all respect, in every respect. आप जैसे रॉ मटेरियल आता है कहाँ से? आपका वेयर हाउस से रॉ मटेरियल आएगा. इट से मशीनरी, देन मशीनरी विल वर्क, देन इट विल गेट ऑपरेट, फिर वहाँ से वो प्रोडक्शन फिनिश गुड्स बन के इट विल कम इनटू द बॉक्स. सो ऑल दिस, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फिनिश आउटपुट, all will be considered in the time. So different methods of doing the job are studied to find out the suitable model. A particular model, a method, a particular program which will be used to study the time. It means there will be no wastage of time and you will be having the best use of. So what is the main aim of the motion study? It is given in the next. The time study may be used in connection with the establishment of efficient method of manufacturing. आपकी जो manufacturing method, it should be very efficient without any wastage of time. Next, it will help you to fix the wages of the worker. हमारा जो example था, 50 units are being produced by one worker. So worker will be paid not according to the that how much
hours he is working. It might be paid as per the number of units he is producing. इससे फायदा क्या होगा? तो वर्कर विल वर्क मोर इफिशियंटली, कि अगर उसको 2 घंटे में वो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू गेट अ मोर अमाउंट. सो इट विल हेल्प यू टू फिक्स द वेजेस फॉर द वर्क. प्लस स्टैंडर्ड टाइम विल बी फिक्स्ड टू कंप्लीट द टास्क. जो भी टास्क है, जॉब है, आपको कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हो जाएगा. एज गुड एज आपको आपका ओएसडी का पेपर लिखना है, 70 मार्क्स का पेपर लिखना है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम? 3 आवर्स. 3 आवर्स के अंदर आप कंप्लीट करोगे. That is the same way time study is used to measure and to fix the particular time period to complete. Plus, it will help you to avoid the delay in manufacturing. क्योंकि आपने ऑलरेडी टाइम फिक्स कर लिया है, तो देयर इज नो चांस कि मैन्युफैक्चरर्स विल गेट डिले. Plus, it helps to estimate the time and the cost which will involve in production. क्योंकि आपको पता है कि इतना टाइम में आपको इतना प्रोडक्शन करना है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. And plus, it will help you to formulate the incentive based wage policy. What is incentives? अगर वर्कर 8 आवर्स में अपना काम कंप्लीट और उसके बाद वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है, उसको टारगेट दे के इन अ डे यू विल कंप्लीट 1000 यूनिट्स, but the person is complaining and doing the work more efficiently. Instead of 1000 he is doing 1500. So for extra units of production he might get the more incentive, more salary, या more wages. So time study will help to formulate the incentive based wage policy for the workers, and this is how the efficiency of worker will increase, production भी increase हो जाएगा, and company will get advantage. Now the next topic it is use of time study, right? Motion study से ज़्यादा time study में लिखना है. So what is the use of time study? Where do we use time study? The time standard fixed through the time study may be used for the following purpose. What is the first purpose? To devise a fair wages incentive plan. अभी हमने देखा कि टाइम स्टडी या टाइम स्टैंडर्ड रेट, that is what is expected of a qualified person while working at a normal performance. What is a time standard rate? टाइम स्टैंडर्ड रेट नाम से पता चलता है कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम है, दैट टाइम को फॉलो करके वन नॉर्मल पर्सन है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है, ही विल कंप्लीट द टास्क एट अ नॉर्मल स्पीड and provides a rational basis for the establishment of incentive. So the time plan, the time study will help the management to fix the incentive wages for the workers so that they can complete the task in a proper time, and even they can get the extra wages for doing the overtime work. Man management. Knowledge of time required to complete the various jobs in a plan helps for the number of workers required for completing that. मैनिंग द प्लांट. मैनिंग द प्लांट मतलब आपके पास एक प्लांट है, वो प्लांट को मैनेज करने के लिए हाउ मच वर्कर यू विल नीड. तो फॉर दैट यू विल सी द टाइम स्टडी कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट या टू मैनेज दैट प्लांट. So the time study will help the management to determine the number of workers required to manage one plant. And the analysis of the time study, analysis of the amount of time required to complete the job is made possible so that the work will be divided. Division of work is possible. You will find out how much time is required to complete the task, and accordingly, as per that time, you will divide the work among the workers. So this is how the time study will help the management to plan out the number of workers needed to complete. Next is what? Improved production control. Now, production control is concerned with what? Planning, scheduling, routing functions so that the operating economics are achieved and customers' requirements are best satisfied. है ना? प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब क्या? कि भाई आपको प्लान करना है, आपको रीशेड्यूल करना है जो आपका टाइम स्लॉट है वो, एंड रूटीन फंक्शन है दैट यू हैव टू ऑपरेट, दैट यू हैव टू प्लान इन सच ए वे दैट आपके जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, and your customer will get the best satisfaction because they are going to get that product at a reasonable price. So what is the basic idea of the time study is to fix the production rules and regulation, and this schedule will help the worker to complete the task at a particular target. In the same way, planning and scheduling will help the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन. अदरवाइज ऐसा होगा कि अगर आपके पास पर्टिकुलर फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं बना है तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस विल गेट इंक्रीज, प्रोसेस भी बड़ी हो जाएगी, टाइम भी ज़्यादा चला जाएगा, एंड द कंपनी विल
प्लस इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन. अभी हमने बताया कि टाइम स्टडी विल हेल्प यू टू find out the estimating will require and what will be the cost involved in particular production. Evaluation of new method. Time study will help in evaluating the new effective method. क्यों? क्योंकि आपने जो ओल्ड मेथड है, आपको लगा कि ओल्ड मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, so the manager might find out the new method where the time requirement will be the less as compared to the earlier one. So the time study will help the management या manager to find out the new method for completing the task in a most economic way. Right? So it will help the generation of the provide standard data. Time study provide the standard time data for the basic job which are likely to repeat in another. Right? आपके जो time study है, it is used what जो भी डेटा आपके पास है ना, जो आप काम पर्टिकुलर टाइम ले रहे हो कंप्लीट करने के लिए, तो उसके आपके पास डेटा होगा, तो दैट डेटा विल बी यूज फॉर अनदर जॉब ऑल्सो, सो दैट दैट सेम मिस्टेक या जो आपने एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज किया है वो पर्टिकुलर मेथड के लिए, वो आप वहीं पर नहीं रिपीट. सो टाइम स्टडी प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टाइम डेटा फॉर द एनी अदर जॉब which can be done basis for labor cost control. Time study may be used to calculate labor cost of product, job or order. What would be the cost of the labor? So how much labor will cost you? That depend upon again time study. आप बोलोगे कैसे? तो भाई वही हमारा एग्जाम्पल कि हमारा जो पर्टिकुलर एक लेबर है वो कितने टाइम में कितना काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें हमारा वेजेस भी पता चलेगा कि भाई इफ आई वांट टू कंप्लीट माय वर्क या माय प्रोडक्शन, आई विल नीड अ वन लेबर टू वर्क फॉर 8 आवर्स. और जैसे आपकी कोई फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, यू माइट हैव टू वर्क फॉर द 24/7, 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा है या कभी 2 शिफ्ट में काम हो रहा है. क्यों? क्योंकि टू कंप्लीट दैट टास्क यू नीड अ मोर लेबर फोर्स. सो द लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी यू नीड अ व्हाट टाइम स्टडी. नाउ आफ्टर सीइंग यूजेस, लेट्स सी द व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी. ना टाइम स्टडी करने का फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है. सो फर्स्ट वन, the time output standard can be easily converted into standard labor. Time output standard meaning what? Particular time slot आपने decide किया है to complete that task या to complete that output, which will easily you can convert into what? Standard labor cost. के particular labor आप रखोगे 8 hours के लिए, तो what will be the cost you will pay? क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको इतना टाइम लगेगा. So the time output standard can be converted into standard labor cost per unit of product. Hence, it will be like a measuring rod to find out कि भाई how much output you are expecting from your labor, कितना labor क्या production करेगा, कितने time में करेगा. That you can easily find out with the time study. Now, when you are observing the time study, it will help you to improve your working method, है ना. जब जो लेबर ऑफिसर है, राइट, द टाइम स्टडी इज डन बाय मेनली लेबर ऑफिसर. बड़ी बड़ी कंपनीज में दे हैव गॉट अ स्पेशल position as a labor officer, the one who are constantly looking at the motion study, that is the work movement hai, time taken by the labor to complete the task. So this time study will help to facilitate a particular standard time required to operate the machine. Next one, saving in cost of production may result due to avoidance of the delay, elimination of the idle hours, right? आपने टाइम सेट कर लिया तो आपका कॉस्ट तो कम होने ही वाला है, क्योंकि आप जो भी आइडल आवर्स है या जो टाइम वेस्ट हो रहा है मशीन ऑपरेट करने में, वो इमीडिएटली डिलीट हो जाए. प्लस जो भी प्रॉपर प्लानिंग आप करोगे, शेड्यूलिंग करोगे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन, ऑल दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर टाइम कि आपको शेड्यूलिंग करना है कि कौन से टाइप पे कितना, उसके लिए प्लानिंग करोगे. सो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट. प्लस टाइम स्टैंडर्ड हेल्प्स इन डिवाइजिंग द रीजनेबल एंड रेशनल वेज पॉलिसी. अब हम लोग ने यूजेस में देख ही लिया था. फर्स्ट वन, इट हेल्प्स यू टू डिसाइड द वर्क इंसेंटिव वेजेस, मतलब जो भी इंसेंटिव्स आपको वर्कर को देना है, that you can easily decide when you are using the tool of time study. and इसके कारण क्या फायदा होगा कि जो वर्कर्स है उनको एक लिमिट पता चल जाएगी कि इतने टाइम में उनको इतना प्रोडक्शन करना है तो उनकी इतनी सैलरी होगी या इतना वेजेस होगा. एंड इफ दे डू मोर देन दैट, then they are going to get extra wages for that. So this is how the time standards will help in increasing the workers' morale and plus their productivity. Now, what is the last point is your limitation. Every
technique has a benefits as well as limitation. Then what is the limitation? Time study are not suitable for the non-repetitive jobs or for the job involving manufacturing of non-standardized product. आपके जो प्रोडक्ट है वो नॉन स्टैंडर्डाइज है, यहाँ पर रिपीटेशन ज़्यादा होता नहीं, तो वहाँ पर आपका टाइम स्टडी यूज होगा. इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल वेयर द प्रोडक्शन इज रिलेटिवली इन अ स्मॉल स्केल, है ना. कोई भी देखो, ये जो भी टेक्निक हम करें वो दैट इज ऑल यूजफुल फॉर द लार्ज स्केल एंटरप्राइज, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वेयर द लेबर कॉस्ट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, सारा काम मशीन से होता है, तो वहां पर आपको टाइम स्टडी का कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं. क्यों? क्योंकि टाइम स्टडी इज मेनली फॉर द लेबर्स, ऑपरेशन, जो ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं मशीन है. पर जहां पर आपका फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है, तो जहां पर वर्क का जो लोड है वो बहुत ही कम है, तो वहां पर आपको इफ आउटपुट स्टैंडर्ड्स आर अनअटेनेबल बाय एन एवरेज वर्कर इट क्रिएट्स अ फ्रस्ट्रेशन अमंग अस. देखो कई बार ऐसा होता है ना, अपने टाइम स्टडी के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूस करना है, एंड इफ दैट, जो भी आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, इफ दैट स्टैंडर्ड इज नॉट बीइंग एबल टू cope up by the worker is not able to achieve that target, the time study, instead of giving a favorable response, might bring a fatigue and nervousness among. And if the standard of performance is easily attained by the below average workers, the labor cost will increase. आपने स्टैंडर्ड टाइम रखा विच इज वेरी, जैसे 1 आवर में यू जस्ट कंप्लीट 10 मिनट्स ऑफ वर्क, फिर वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी लेबर कर सकता है. तो उसके कारण क्या होगा, अगर आपने बिलो पे ही रखा टाइम स्टैंडर्ड तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा. आपने एवरेज से भी ज्यादा रखा तो वर्कर भी फील फैटिक. So it means what, when you are setting the time standard very accurate and perfect, otherwise instead of getting benefits, it might become a limitation for. Next, now इफ इंसेंटिव वेज प्लान इज अडॉप्टेड, है ना, आप इंसेंटिव वेज प्लान कर रहे हो तो वर्कर क्या करेंगे, टू गेट अ मोर इंसेंटिव दे माइट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी. सो इट माइट हैपन्स कि भाई आपकी क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है, टू गेट द मोर इंसेंटिव. Time study ignores the mechanical, psychological, sociological factor of variation in the worker. जो time study they never give more importance to psychology, emotions, work, and they work as a mechanical. जैसे कोई machine है वैसे काम करना है. So they are all that your emotions and the psychology of the worker is not considered by the time study. Trade union may frequently raise an objection on time study. Trade unions never allow the time study. Why? Because it is a bias towards the management. Some managers might take a higher standard to complete the time. कि भाई कम टाइम में फटाफट करो. Some managers may not make a proper use of that time study. So in that case, trade union may reject, yeah, bring an objection for the time study. Now, an analyst can टाइम ओनली व्हेन ही कैन सी, है ना. आपको टाइम को देखना पड़ेगा, आपके वन हैज टू सी दैट हाउ मच टाइम इज टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क. हेंस द मैनुअल जॉब्स है वो ज्यादा करके यहाँ पर होता नहीं. एंड लास्ट वन, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट ऑल द वर्क ऑफ अ जॉब ऑन अ स्टैंडर्ड. इट does not pay to have a standards for only a part of the job, right? अब सारे के सारे काम standard time से नहीं हो सकते. There are certain work which cannot be done with a particular time. In such case, the time study may not be useful. There may be production like कहीं पर आधा काम time study से होता है, half work is not done by the time study. Like suppose the machine has got not working properly, तो जो आपका engineer, he will come to check the machine. In that, time study is not useful. वो तो कितना भी टाइम लग सकता है टू रिपेयर दैट. सो इन दैट केस द टाइम स्टडी मे नॉट बी यूजफुल. सो देयर आर मेनी लिमिटेशंस आर देयर ऑन द टाइम स्टडी. In short, time study can be utilized to save your time and to fix the standard time to produce a particular production, and which is useful more to the large scale where the work is not done automatically but it is done half with a manually. फ्रेंड्स, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस आंसर. और जितना समझाया, जितना बताया उतना आप लिखोगे फॉर अ टाइम स्टडी आंसर, देन इट इज सफिशिएंट. मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड यू विल पास इट ऑन दिस लिंक टू मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स, तो सबको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्स के टाइम में. थैंक यू.